इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज आर गिवन इन लिस्ट 1। सो इस लिस्ट 1 में हमें 4 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं और हर कॉम्बिनेशन में 2 लेंसेज हैं और इन लेंसेज में जो सब सारे कर्व्ड सर्फेसेज हैं इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनका 1.5। हमें मैच करना है इन कॉम्बिनेशन को इनके फोकल लेंथ से जो कि लिस्ट 2 में गिवन है हमें, और इसमें से फिर हमें ऑप्शंस जो हमें 4 गिवन है इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो हम देख पा रहे हैं सबसे पहले अगर हम कन्वेक्स लेंस जो एक पी लेंस में अगर हम एक सिंगल लेंस का जो फिगर देखें कुछ इस टाइप से, इसका अगर हम फोकल लेंथ निकाल लें तो हम वो कैसे निकालेंगे, वो हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला से निकालेंगे जो कि होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे r1 और r2 क्या है, ये इनके इस लेंस के दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं। तो इस कन्वेक्स लेंस के लिए 1/f क्या आ जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/-r, यानी कि 1/f हमारे पास आएगा 1/r के बराबर, और जो एक कन्वेक्स लेंस का इंडिविजुअल फोकल लेंथ है ये है f इज इक्वल टू r। नाउ अगर हम p कॉम्बिनेशन की बात करें तो p कॉम्बिनेशन में हमारे पास ऐसे दो लेंसेज हैं, ऐसे ही दो कन्वेक्स लेंस का अगर हमें नेट फोकल लेंथ निकालना हो तो 1/fp हमारे पास होगा रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज का सम। सो 1/f प्लस 1/f जो कि हो जाएगा 2/r के बराबर। सो इससे हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन p जो होगा fp वो आएगा हमारे पास r/2। सो हम देख पा रहे हैं p जो है हमारा मैच हो गया कॉलम 2 के साथ। नाउ अगर अब हम कॉम्बिनेशन q को देखें, सो q में क्या है, q में ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। सो प्लेनो कन्वेक्स लेंस को अगर हम देखें तो एक इंडिविजुअल प्लेनो कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, ये r1 जो है इनफाइनाइट की टेंड हो जाएगा। सो ये वाला जो सरफेस है हमारे पास ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सो हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी। सो हम देख पा रहे हैं कि जो 1/f डैश अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो 1/f डैश हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू 1 इनफाइनाइट माइनस 1/-r, क्योंकि दूसरा सरफेस जो है वो तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r के बराबर ही है और वो नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। सो हमारे पास ये आ जाएगा 0.5 इंटू 1/r, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं f डैश इज इक्वल टू 2r। सो ऐसे अगर 2r फोकल लेंथ के कॉम्बिनेशन जो हो गए, सो इनके केस में जो नेट फोकल लेंथ होगा 1/f3 वो बराबर हो जाएगा 1/f डैश प्लस 1/f डैश के बराबर। सो f डैश की वैल्यू है 2r। सो हम इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास fq की वैल्यू क्या आ जाएगी, fq की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r के बराबर। सो fq हम यहाँ पे देखें तो सेकेंड केस में ये फोर्थ ऑप्शन जो है मैच हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास ये थर्ड केस है r जिसमें प्लेनो कनकेव लेंसेज हैं, और फोर्थ केस में ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम अब r और s कॉम्बिनेशन को भी देखें, सो r कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो जो इंडिविजुअल ये एक प्लेनो कनकेव लेंस है, इसका अगर हम फोकल लेंथ निकालना चाहें तो 1/f डबल डैश यहाँ पे लिखूं मैं, तो 1/f डबल डैश हो जाएगा यहाँ पे 1.5 माइनस 1। इस केस में 1/r1 की जगह r1 क्या है यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 1/r2। सो r2 यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि इस सरफेस का जो सेंटर होगा वो इस लेंस के राइट हैंड साइड में ही मिलेगा कहीं। सो ये जो r2 हो जाएगा ये पॉजिटिव रहेगा, सो ये माइनस 1/r हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1/f डबल डैश इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय r, और f डबल डैश हमारे पास आ जाएगा -2r के बराबर। ना ऐसे अगर दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन को हमें देखना हो सो 1/fr जो होगा नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, सो ये इक्वल हो जाएगा 1/f डबल डैश प्लस 1/f डबल डैश के बराबर, या फिर हम कह सकते हैं 2/f डबल डैश। तो ये इक्वल हो जाएगा 2/-2r के बराबर, और fr हमारे पास आएगा -r के बराबर। तो हम देख पा रहे हैं r केस में ये
इस थर्ड ऑप्शन से मैच कर जाएगा। सो बचा हुआ ऑप्शन जो है हमारा एस, ये ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन से ही मैच करेगा, पर हम इसे भी कैलकुलेट एक बार कर लेते हैं। सो इस एस कॉम्बिनेशन में हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक तो ये कन्वेक्स लेंस है और एक ये प्लेनो कनकेव लेंस है। सो इसका हम फोकल लेंथ निकाल चुके हैं, इसका फोकल लेंथ हमने निकाला था एफ इज इक्वल टू आर के बराबर, और इस प्लेनो कनकेव लेंस का हमने आर कॉम्बिनेशन वाले फोकल लेंथ में निकाला था, इसका कॉम्बिनेशन आया था हमारे पास -2r। सो इन दोनों के फोकल लेंथ हमारे पास इंडिविजुअली है। सो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हम क्या लिख सकते हैं, 1/fs इज इक्वल टू 1 बाय ये पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ जो कि है r प्लस 1/-2r। सो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/r माइनस 1/2r, जो कि होगा 1/2r के बराबर। इसका मतलब जो fs है ये 2r के बराबर है, जो कि हमें लिस्ट 2 में फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा है। सो हमने ये s कॉम्बिनेशन भी इस 1 कॉम्बिनेशन से मैच कर लिया। सो इसमें अगर हम कोड बनाए यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये p q r और s। p हमारा मैच किया है 2 के साथ, q मैच किया है हमारा 4 के साथ, r मैच किया है 3 के साथ और s मैच किया है 1 के साथ। सो 2 4 3 1 ये हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन 2 में। सो ऑप्शन 2 हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। Hello everyone. So in the question, it is given that two transparent media of refractive indices mu1 and mu3 have a solid lens shaped transparent material of refractive index mu2 between them as shown in the figure in column 2. A ray transferring these media is also shown in the figure. In column 1, different relationship between mu1, mu2 and mu3 are given. Match them to the ray diagram shown in the column 2. Okay, so in the column 2, the ray diagram is given to us, and we have to match the conditions accordingly that is given in the column 1. Okay, so what are the conditions that are matching to the ray diagram in the column 2? That is what we have to match in this question. Okay, so as you can see, first we'll talk about the law of reflection. Okay, because here the refractive indices is given of the transparent media. So therefore, first we'll talk about what is law of reflection. What is law of reflection? So the law of reflection says, okay, so law of reflection, it says that when light ray goes from a rarer medium to the denser, okay, so from a rarer medium to the denser medium, then it bends toward normal. Okay, then it will bend towards normal. Okay, that is the law of reflection, and the vice versa. It also follows the vice versa. That means if a ray is passing from denser medium to the rarer medium, then it will bend away from the normal. Okay, so it will bend away from normal. Okay, so this is what the law of reflection says. So the same thing we are going to apply in this condition in the ray diagram, and after that we are going to match this condition that is given in the column 1. So if we take the case 1, that is P. Okay, so in this case there is the ray that is coming on the left hand side of this surface. Okay, so what we'll do, we'll draw the normal to this surface. So to draw this normal to the surface, first we'll draw this surface. Okay, so this surface is something like this. Okay, so only this part of the surface is being utilized here, but the total overall it forms a circle, and
it is having a center at the midpoint of this circle. Okay, so here is the line that is passing through the center of this lens as well as the circle. So now, as you can see, what will be the normal? So normal line will be the one that will connect this point and the center of this surface. Okay, so this is the normal line. Okay, so this is the normal line, and now as you can see that the ray is incidenting on this surface, and you can see that it should have followed this path, but it has been deflected towards the normal. Okay, so that means it is deflected towards the normal. That means it is coming from the uh, rarer medium to the denser medium. Therefore, what will happen that the mu2 will be greater than the mu1. This is in the case of P. Okay. Now, as you can see, this is about the part on the left hand side that is about mu1 and mu2. Now we have to find out what will happen to the right side of this part, that is to mu2 and mu3 in the case of, or in the option B. So in the option you can see that there is no deflection in the line or in the ray when it is coming out from mu2 to mu3, or when it is coming out from the medium which is having a refractive index of mu2 to mu3. So what does this mean? This means that the mu2 is equal to mu3 because there is no deflection in the ray. Okay, now similarly we are going to draw the ray diagram which is already been given, and we are trying to find out that which medium is denser or rarer by using the law of reflection for the option Q. So for option Q, you can see that again we will do the same thing. We are going to draw this circle. Okay, and similarly this is the center line, and here will be the center of this circle, and we will draw the normal line. So normal line is going to be like this. Okay, so this is your normal line. So now you can see that it's the line, it should have followed this path. Okay, but it's been reflected away from the normal. So therefore away from the normal, therefore this is the rarer medium and this is the denser medium. So the condition will be that the mu1 is denser than the mu2. Okay, so this is your condition when the ray is entering from mu1 medium to mu2. Now we'll talk about when it goes from mu2 to mu3. So in the case of mu2 to mu3, so first I'll erase this diagram, and in case of mu2 to mu3, you can see that the ray is been reflected. Okay, in the first case it wasn't, therefore the refractive index was same, but in this case, as you can see, it should have followed this path. Okay, but it is reflected from the normal. Okay, so in this case normal is going to be same because here is the it's almost like a plane mirror. It is not a concave lens, so therefore the normal is going to be this, and it should have followed this path, but it is deflected away from the normal. Therefore this is going to be your rarer medium, and this is going to be denser medium. So in this case mu2 is greater than mu3. Similarly, now we are going to do it for the third case, that is option R. So in this we will draw again the circle. Okay, this is the center line. Here is the center of the circle, and the normal we are going to draw from this. So this is your normal. So now you can see that the ray is being deflected towards the normal. Okay, so therefore this is your
tensor medium and this is your rare medium. So condition is mu2 is greater than mu1. Similarly, for when the ray goes from mu2 to mu3, so there is no deflection. Okay, it follows the same line. Therefore, mu3 is equal to mu2. Now we are going to draw the diagram for option S. So for option S, again we are going to draw this circle. Okay, this is circle. This is your center line. Suppose this is the center of circle, and here is the normal line. Okay, so now you can see that the ray, when it goes from mu1 to mu2, it is deflected or it is refracted away from the normal. So therefore, it is refracted away from the normal. Therefore, this is going to be your tensor medium, and this is going to be your sorry. Okay, so okay, so now if it is going from the tensor medium to the rarer medium, that is why it is going away from the normal. Okay, so therefore the tensor medium, therefore the mu1 is greater than mu2, and you can see. Okay, so for again it will draw the same diagram for the mu2 and mu3. So for mu2 and mu3, you can see that this is okay. So this is your normal for in the case of mu2 to mu3. Okay, and you can see that the ray is then reflected or refracted away from the normal. So therefore, it is reflected away from the normal. Therefore, this is your rarer medium. This is your tensor medium. So tensor medium is mu2, which is greater than mu3. Similarly, for the case of T, you can see that okay, you can see again we are going to draw the circle. I will draw the center line. Here is your center, and we are going to draw the normal. So this is your normal. So you can see that the line should have followed this path, but it is reflected away from the normal. Therefore, this is your rarer medium. This is your tensor medium. So mu1 is greater than mu2, and you can see that there is no reflection or deflection in the beam when it or in the ray when it passes from mu2 to mu3. Therefore, the reflection index is same for this concept. Now we are going to match this to the option. So for the option A, it matches with T and with the condition R. Okay. The option B matches with the condition Q, and it also matches with the condition of S and T. Okay, so mu2 is equal to mu3. This condition matches with option P, R, and T. Similarly, mu2 is greater than mu3. In this, it matches with the option Q, and it also matches with the option S. Okay, so these are your answers. Thank you.